देखिए, एक रियलिटी शो है जिसका बेसब्री से फैंस इंतजार करते हैं और वो है खतरों के खिलाड़ी, विच इज ऑल सेट फॉर इट्स सीजन 14। और जितने प्रोमोज आपने देखे होंगे डेयरडेविल स्टंट्स आपके फेवरेट एक्टर्स को करते हुए, उनमें से एक है आज की हमारी खास मेहमान का, द छोटी सरदारनी ऑफ टेलीविजन निमृत का, जो बहुत ऐसा स्टंट कर रही है कि हमें लग रहा है ये स्टंट हुआ होगा या ऐसे और कितने उन्होंने स्टंट्स किए होंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनसे हम बातें करेंगे, बट सबसे पहले अ वार्म वार्म वेलकम टू यू निमृत ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much for having me here today. Thank you. थैंक यू, क्योंकि एक तो फैंस जानना चाहेंगे कि भाई हमारी जो निमृत है, जिनको हमने एक्टिंग करते हुए देखा है, ऑफ कोर्स बिग बॉस में भी उनका एक अलग रूप देखा था, अभी स्टंट वाले शो में गई हैं, तो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? कैसा रहा, क्या रहा एक्सपीरियंस? Experience was amazing. It has to be hands down one of the best experiences of my life. और रही बात चोटों की तो आई थिंक ऑल ऑफ एज एज अ बैच हैव ओनली endured so much. बट ये शो का ऐसा फॉर्मेट है कि आप इन द मोमेंट रियलाइज भी नहीं करते हैं और फिर अगले दिन समझ में आता है कि अच्छा कहाँ कहाँ लगी है. सो देयर हैज टू बी लाइक देयर वर डेज व्हेन लिटरली एवरी पार्ट ऑफ अस वाज bruised, but it is what it is, and I guess it was all worth it. राइट। एंड अ लॉट ऑफ जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, मैंने एक यूनानिमसली एक चीज सुनी है कि जो टीम है, वो इतने अच्छे से सारी प्रेप करके रखती है दैट आपको जाके सिर्फ स्टंट अच्छे से परफॉर्म करना, बट एवरीथिंग इज वेल टेकन केयर ऑफ। सो हाउ ट्रू इज दैट? It is extremely true. True. I think ये जो एक शो है, it's a very very difficult show for the team's perspective. In terms of like putting together a show of this magnitude, to make sure that all sort of safety measures are taken care of. The entire team of the stunt team and everyone on the action team. There are especially individuals and professionals from South African team to, so you have the best. And the fact that I mean आप एक you're just like on a moving situation कि आज यहाँ setup है and यहाँ setup है, so logistically it is very very challenging for everyone on the team, right? So but the way they do it, it is commendable. I mean as actors, as participants of the show, हमारा काम सिर्फ है कि यहाँ खड़े हो जाइए और obviously perform कीजिए, and that's, but to make a safe and a happy environment for us, that's the real challenge. So I would say kudos to the entire team for doing that. They're doing a brilliant job, and her season they try to elevate it, which is amazing. Her season और difficult होता जाता है, so it's very very nice. Right. But despite all the preparation and despite all the safety things that they keep in mind, ये कोई सीरियल तो है नहीं कि जिसमें आपको टेक करने के लिए मिलेगा या जिसमें आप अपने स्टंट की रिहर्सल कर सकते हो फिर एक परफेक्ट शॉट दे दो, राइट? यहाँ पे तो एक ही बार आपको स्टंट Yeah, बताया जाएगा, रिवील किया जाएगा और करना है। सो वो जब हम देखते हैं कि भाई चलती हुई yeah. ट्रेन पे आप चढ़ रही हैं, आई एम श्योर और भी डेयरडेविल स्टंट्स किए होंगे, उस समय कितनी अंदर से धक 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 Yeah. धक हो रही होती है? वाहे गुरु तो आप कह रही हैं, कितना कहा आपने? It is true because to imagine yourself, like you said, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही opportunity है. It's like a single take, and those single takes can sometimes be so important with respect to your journey in the show. Like one slight mistake here and there could probably send you back home, and आई थिंक फॉर एवरी वन द इंटेंशन इज कि आप पूरा कोर्स ऑफ द जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बिकॉज आपको ये कहीं एक्सपीरियंस और कहीं मिलेगा नहीं, राइट? सो इट डजंट हैव टू डू विद it, not so much about the trophy or say the money you're making out of it or the positioning that you want to have. All of those things are not accounted for. You just want to be till the end to experience it. तो बहुत ज्यादा in the real sense, sense, when you say that, oh my god, I'm shitting bricks is what you experience when you're actually there. And you do that but it has to, but जब आप वो overcome कर लेते हो in that microsecond, when you can just get over it and just do it, it's the most amazing feeling. It feels like
this flush of endorphins, and you're on this high, like I did it. Right. So that's an experience kind of feeling, it was just like totally worth it. करेक्ट, आई एम श्योर, बिकॉज जब जब हम देखते हैं सारे एपिसोड्स जब आते हैं, सो आई एम श्योर फिंगर्स क्रॉस करके सब बैठे रहते होंगे कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी जिसके लिए वो रूट कर रहे हैं वो स्टंट कर जाए, बस कंप्लीट कर ले, हारना जीतना तो जैसे Yeah, आपने कहा वो सेकेंडरी आता है। वन मोर थिंग जो right. मुझे खतरों के खिलाड़ी की डिफरेंट लगती है फ्रॉम एनी रियलिटी शो विच इज अबाउट विनिंग, क्योंकि एक ही को ट्रॉफी मिलेगी, इज हाउ ऑल ऑफ यू Right. रूट फॉर ईच अदर। सो हाउ इज द स्पिरिट Yeah. वाइल जब स्टंट्स हो रहे होते हैं? The spirit is amazing. ऐसा लगता ही नहीं है that we are competing against each other, very frankly. Because if you come to think of it, a lot of the factors are not in your hand. हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल कि क्या आप स्टंट करने पहले जा रहे हो या क्या आप स्टंट करने बाद में जा रहे हो, क्या आप किसी का स्टंट देख पा रहे हो या क्या आप नहीं देख पा रहे हो, राइट? क्या आपके टाइम पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जो आपके फेवर में है और मे बी नहीं है फेवर में, और इवन थ्रू द कोर्स ऑफ द शो आपको क्या स्टंट मिल रहा है। परहैप्स आई एम गेटिंग स्टंट्स व्हिच आई एम गुड एट, लाइक फॉर somebody strength is their forte, or for someone perhaps swimming is their forte, and शायद वो सेम चीजें किसी के लिए वीकनेस रही हो, राइट? एंड इट हैज so much to do with luck and a lot of the permutation combinations that come together. So just like irrespective of all of that, आपको realize ये होता है कि आप actually देखें तो आप अपने आप से ही compete कर रहे हो, because what you're perhaps good at is something that I may not be good at, and maybe today your luck is in favor and mine isn't. So राइट। everything's so subjective that by the end of it होता यही है कि आप एक दूसरे को genuinely बहुत whole hearted तरीके से support करते हो, because like I said, like it's an experience that only people experiencing in that moment can relate. And I would say this quite frankly कि television पे देखकर चीजें बहुत आसान लगती हैं as opposed to how it is when you're actually there. राइट। So it's a lot more harder. So everyone's just like, it's so positive and nice to see that kind of energy, which you ट्रू। perhaps don't see in a reality show, because most shows are about drama and about controversies and friction. But to राइट। see kind of warmth and camaraderie and sportsmanship is really nice. करेक्ट, एंड वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट भी करता है टू इन दैट मोमेंट टू डू बेटर, कि भाई सब लोग चीयर अप Absolutely. कर रहे हैं आपके लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी मैं पापा को फोन करके बताऊं कि आज मुझे ट्रेन पे चढ़ना पड़ा और फिर ऐसे ऐसे था, उनको तो पहले विजुअली समझ में नहीं आएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ, राइट? हाँ लेट अलोन हाँ, करेक्ट। एंड इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस दैट इज रिलेटेबल. Maybe perhaps for my father, that because he's a retired Fauji, so he may have better experiences than this in terms of adrenaline. But if I speak to my friends also, वो क्या ही एक रिलेटेबिलिटी ही नहीं रह जाती है करेक्ट। कॉन्वर्सेशन में विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट. दैट्स व्हेन वी ऑल कम इनटू प्ले एंड हम ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एवरीवन डिड. करेक्ट, बट ऑल्सो व्हेन आप ऐसे किसी एक फॉर्मेट में जा रहे होते हो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने, सो एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है, फिजिकल तो है ही इसमें बिकॉज आपको बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए, बट इसमें यस. मेंटल भी है कि भाई अगर आपका कोई फियर है और वही स्टंट में आ गया तो उसको ओवरकम करना। सो निमृत, करेक्ट. आपकी प्रेप, क्या प्रेप आप लेके गए थे एंड कितनी वो काम आई? So, if I only talk about my physical, attributes wise, my fitness wise, if I have to talk about my prep, तो मैंने अलग अलग, I made sure कि I had agility, I had CrossFit training, I had MMA in my, my week was divided very systematically कि these are my days for MMA, CrossFit, strength training, agility and stretching, because I know that different forms of workout will help me for different purposes, whether it is राइट। endurance, strength, XYZ. Having said that, like you said, आपने जो mental strength के बारे में बात करी, I think for me personally, what helped is that life's experiences in the past have been such that I have, like, I look forward subconsciously to pick things from every experience. Just that's just how I feel I have been. So I think
a lot of the personal life challenges or professional life challenges that I've faced in the past really helped channelize and become a lot more stronger over the period of time. So the fact that during the course of the show कभी भी मेरे दिमाग में कोई भी स्टंट क्विट करने का थॉट भी नहीं आया. Hmm. No matter how scared I was or and jittery I felt, not for a split second did I feel that uh, I'm going to quit. Like that thought didn't cross my mind. So the Right. fact that I was so sure of not aborting just speaks volumes about how what my attitude is in life. So I kind of realized that about myself कि I think life ने इतना कुछ सिखा दिया है और शायद क्विट करना या गिव अप करना डिक्शनरी में है ही नहीं हमारे. राइट, एंड आई थिंक इस तरह के फॉर्मेट वाले शो में ये तो बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आप अगर मिड परफॉर्मेंस आप स्टंट क्विट कर जाते हो, दैट मीन्स यूर ऑल्सो क्विटिंग फ्रॉम द शो, बट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट आप और एक लेवल आगे जाते हो. Yeah, absolutely, because like you said, it can result, you quitting in that moment can result in you leaving the show. So it's about how badly you want to be where you are, and it's also about understanding that life is going to throw you with a lot of challenges every now and then. It's just about how you navigate through them and move ahead. Correct, correct. On that topic, as an actor who's constantly under the public radar, public eye, और अभी जो ये सब ट्रोल्स रोल्स चलते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स एक्टर्स का एक सेट है जो उनको completely अडोर करता है उनके हर काम में, उनको अप्रिशिएट करता है. देन देयर इज दिस अदर सेट जो अननेसेसरीली इश्यूज क्रिएट करता है फॉर एवरीथिंग. एज एन एक्टर, जो सोशल मीडिया अभी इतना एक्टिव हो गया है या इतना इंक्लूसिव या इंट्रूसिव हो गया है, निम्रत कैसे फेस करते हो आप उस सब? I think, see, if I have to be very honest, the fact that I was a part of a previous reality show very early on in my career, and that's not even a choice that I had thought that I would make, but circumstantially, that's how it happened. And because it happened so early on in my career, is why I feel that I have gained a lot from that experience. और रही बात सोशल मीडिया की, तो आई एम ऑल्सो वेरी aware of the PRs behind it and the marketing behind it and the bots behind it. And we all are very aware of how untrue these numbers, comments and opinions are. तो रही बात मेरे काम की, मुझे अगर एक ऑनेस्ट रिव्यू जानना है अब मेरे काम को लेकर, तो दैट इज समथिंग दैट आई कैन गेज from human interaction on a day-to-day basis, right? When I Right. step out, when I interact with different sections of the society, Mm. right? And people coming from different stratas of the society, when I have those kind of interactions with different people is when I know or when I understand what's the honest market review. Whereas what is posted on the gram, and I can say that because I mean, through the course of my previous reality show, I was mocked that I'm perhaps pretending to be depressed, or maybe I'm trying to gain sympathy, or perhaps, people mocked my feed, my mental health issues. Everything was like too out there, and they didn't even leave my family out of it. So I think the fact that it happened so early on in my career has made me comparatively very thick-skinned now. And I have chosen to identify and realize what is true and what is all a gimmick. Right. And our life on social media are full of gimmicks, Correct. And and now projection. Nimrit is so prepared for the trolls के bring it on, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मुझे इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि किसी के मार्केटिंग वाले शायद पैसा खर्च रहे हैं कि हमें अपना आर्टिस्ट थोड़ा बड़ा दिखाना है. शायद लोग खुद अपने जीवन में बहुत दुखी हैं इसलिए जेन्युइनली बैठे हुए हैं.
It could be anything. Correct. So Correct. so it's very, and as long as people are talking about me and are giving me engagement on my posts, I'm fine. If you have enough time and I'm so important to you that you're coming and out of spite or whatever you may feel, you're coming and feeding that on my social media, I have no problem with it at all. Right. So it's And I fine. think amidst all that कोई एक मैसेज ऐसा आ जाए जिसमें बोले when are we seeing you next, I think that's enough for you to kind of give yourself a pat on the back that है कुछ और ऐसे लोग, ऐसी तादाद भी है जो genuinely आपको पसंद करती है और Oh, चाहती है आप दिखें. absolutely. But because I'm not kidding, the fact that I started from Miss India, I remember post Miss India, I had some like 25K followers and very like loyal people trying to help me, motivate me. So from my journey from that to now, in such a less span of time, has been so fulfilling. And I swear, and I touch wood, I would say that I'm blessed with a large section of people who genuinely wish well for me. There is so much of positivity out there, with respect to them sending out messages or tagging me in things or appreciating me, sending, even when it's not required, just sending me sometimes flowers and everything also, like they keep Right. doing a lot of things in terms of, so I feel that I focus more on that. That, these are the people who have backed me, these are the people who relate with me, and this is my actual audience, and not Correct. the people who Correct. have. And this is the lot of people who are now really waiting for your Bollywood debut, and of course आगे भी जो आप ढेर Yes. सारा काम करें, तो क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? I think I just feel that with every, like in life only, I feel like there's been such a phase of ups and downs that perhaps that was needed for me to be better prepared in what's coming. And I'm just finally very excited to embrace those kind of positive changes in my life. And I'm excited to just work because that gives me absolute joy. And I just can't wait for people to see it too. Thank you so much, Nimrat, and wishing you all the luck for everything that you do in future in your career. Thank you so much. Thanks a lot. And thank you so much for your time.